Hello everyone, I welcome you all again. I hope you all are doing well. So, continuing with the session number 5, we are reading about origins and related words. We have read about doctor for women. Now we will be reading about children, okay? So, pediatrician is a combination of Greek word paidos, that is the spelling, P-A-I-D-O-S, child, that means child, okay? Atria means medical healing and Asian means expert. As we have already read about these small words, how these all words combine together to make a huge combination of words saying a different meaning, okay? So the spelling of pediatrician is P-A-E-D-I-A-T-R-I-C-I-A-N, pediatrician, okay? So as you know, I have already said about it. It is the origination of Greek, okay? So pediatrics is a word जो etymologically medical healing of a child से deal करता है, kind of ये etymologically इसका root word है healing of a child, और जो adjective we use for it is pediatric, and the spelling is P-A-E-D-I-A-T-R-I-C, okay? So as we have already read a lot about children's, so we are here to understand what is the meaning of that particular word. So pedagogy, okay, this is a new word for you all because this is something related to teaching and learning process. Those who are teachers will be knowing it better, and commonly we don't use this word. In psychology this word is very much used, okay? So P-E-D-A-G-O-G-Y, which loses but still combines pedos with A-G-O-G-O-S. Leading is etymologically the healing of basically children, okay? It is related to the leading of children as well. Basically how you lead a child, this is a thing which you have to put in over here, है ना? जैसे पेडागॉजी के बारे में वी विल बी रीडिंग, तो ऐसा बोला जाता है कि जो इसका रूट वर्ड है, किसी बच्चे को लीड करना इज़ द रूट वर्ड ऑफ इट, ओके? सो एंड टू व्हाट डू यू बेसिकली लीड अबाउट देम, ओके? सो वी विल बी रीडिंग अबाउट इट, टू लर्निंग, टू डेवलपमेंट, टू ग्रोथ, टू मैच्योरिटी. फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ इन्फेंट्स आर लेड बाय एडल्ट्स, ओके? जैसा कि आपके घर में ऐसा होता होगा कि whenever you see a small child, he is often told कि no don't eat this, don't do that, don't do this, मतलब ऐसा मत करो, ये मत करो. और वो कौन लोग होते हैं जो बोलते हैं ऐसा? उनसे जो छोटे यंगर सिबलिंग्स होते हैं ऐसा तो नहीं बोलते. द एल्डर वंस, जो एडल्ट होते हैं बेसिकली, वो लोग उनको बोलते हैं कि डोंट डू दैट, मतलब दैट इज़ वेरी रॉन्ग. हाउ, मतलब मीन्स यू अंडरस्टैंड कि जब उनका जन्म होता है तो उनको जो लोग गाइड करते हैं, है ना, मोमेंट ऑफ बर्थ से उनको सिखाने के लिए, बेसिकली लर्निंग के लिए, उनका डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट जस्ट नॉट मीन्स मेंटल और फिजिकल, इट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट, ओके? और या फिर ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, और मैच्योरिटी. बेसिकली हाउ अ चाइल्ड बिकम्स मोर मैच्योर, लेस मैच्योर, कंपैरिजन कैसे करते हैं हम? जस्ट उनकी परवरिश जो होती है ना, उनके बेसिस पे वी यूजुअली से कि ओ ही इज़ नॉट दैट मैच्योर काइंड ऑफ, ओके? सो दे आर टॉट, यू अंडरस्टैंड नाउ. सो फर्स्ट बेसिकली बाय पेरेंट्स एंड देन बाय टीचर्स, और फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, दे आर नो लॉन्गर टॉट, ओके? तो टू फिट इनटू द कल्चर इन विच दे आर बॉर्न, उनको सिखाना पड़ता है कि आप इस कल्चर में जन्म लिए हो तो व्हाट यू हैव टू लर्न एंड ऑल दोज थिंग्स. बेसिकली आई डोंट बिलीव इन ऑल सच थिंग्स, बट as we have to read, I am telling you for that sake. I believe that this is my personal opinion, don't take it wrong. There is no such kind of culture which a child should learn. He or she should be taught, like, you should accept everyone. He or she should be taught about adaptation, okay?
So how one can adapt themselves in every situation, I believe that strongly. So let's come to the point. So hence pedagogy, as we know, pedagogy, which by derivation means the leading of a child, as we have already discussed about it, refers actually to the principles and methods of teaching. Okay, so the जो principles और methods हैं teaching के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? pedagogy. Okay, so जो adjective used है वो pedagogic है, जिसकी spelling ऐसे है PEDAGOGIC. Okay, और pedagogical, and the spelling is PEDAGOGICAL. थोड़ा सा you will be like pronunciation and written spelling both are different over here, so you have to pronounce it very like बारीकी से, ठीक है. So जो PED वर्ड है, आप इसमें जो देखते हैं पेडेस्टल में, पेडल में, पेडेस्ट्रियन में, और जो भी सारे लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, जिसका पेडिस होता है रूट वर्ड, और वो बेसिकली उसका मीनिंग होता है फूट. एंड डिस्पाइट द आइडेंटिकल स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग बहुत ही यूनिक है, जो इंग्लिश में इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है जो ग्रीक वर्ड पेडोज है उससे. कैन यू इमेजिन कि सिमिलैरिटी स्पेलिंग में होता है, बट वी डोंट नो वेदर द मीनिंग इज सेम और नॉट, just because of one thing. The origination of word determines what should be the meaning of that particular word. Can you imagine? Okay, this was interesting for me as well. So a pedagogue is versed in pedagogy. So pedagogue की spelling I'll be telling you, PEDAGOGUE. So but pedagogue, and unhappy history, like उसकी इतिहास ही बहुत ज़्यादा नाखुश वाली है, you can say, है ना, जो from its original neutral meaning of teacher, it has deteriorated to the point where it refers today to a narrow-minded, straight-laced, old-fashioned dogmatic teacher. Okay, so it is a word of contempt and should be used with caution. Always use those words with caution. Never use the word everywhere, okay, because the meaning of it is derogatory as well. So this is the thing. So like pedagogue, demagogue, okay, demagogue, DEMAGOGUE, it is also having a negative meaning. By derivation, a leader, AGOGOS, is a leader of the people, demos, DEMOS. Okay, so demagogue today is actually one who attempts in essence to mislead